Hi everyone, good evening and welcome to this session which is about the law entrance examinations beyond CLAT. And in fact, I would go a step ahead and I would say law entrance examinations beyond CLAT, ALET and SLAT, which are still available for the students who are seeking admissions to a good law school in the year 2025. So, in this session, I'm going to talk about some of the bigger entrance examinations which are yet to be held. बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम पे होंगे. So, I'm going to talk about those examinations today. CLAT, ALET और SLAT examination definitely over हो चुके हैं, तो उनके results भी आ चुके हैं except for SLAT. तो NLU entrances जो हैं वो already complete हैं. The results have been announced for both CLAT as well as ALET. The scores have been released. And first of all, congratulations to those who have made it to the national law universities. And I'm sure there are many of you who could not make it despite the best of your efforts. But you don't need to lose heart. There are still a lot of colleges which are available also to CLAT as well as they have their own entrance examination. So in this session, I am going to talk about some of the important entrance examinations which you can still take and they'll be conducted at a later stage. So I'm going to talk about those, and I'll also talk about some of the good colleges which you can still apply based on your CLAT score. So it's not that all the doors are closed for you. And before you decide and go ahead and talk about whether I should drop a year or not, first of all, it's important that you explore all your opportunities. So don't go for any decision which should be in haste. So first of all, evaluate all your options. There are still good colleges available, and I have been talking about this as well. Not every national university is always good. So there are lower ranked NLUs. I'm sure most of you would even not consider that, but there are some private law schools, some government law schools, which are equally competitive or much better actually. So before you decide anything, I would suggest you explore all your opportunities in case you have not made it to the national universities at this point of time. Some of you have done really well in the SLAT examination, which was conducted on 13th and 15th of December. The scorecard of SLAT will be released on 26th of December, and this is where you'll get to know how you have performed. Okay, and the respective symbiosis law schools will start shortlisting the students. They'll display the names of the students who will be shortlisted starting from 27th onwards. But before I move ahead, one very important aspect about the SLAT examination is, please understand, in SLAT, you have a different process altogether, unlike what you have gone for CLAT और ALET. तो SLAT का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, मैंने SLAT स्ट्रैटेजी में भी इसके ऊपर बात किया था, तो मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ इसको कि वो क्या है. कि अगर आपने SLAT का एग्जाम दिया है, but if you have not applied to any of the SLS, now each of the symbiosis law school, whether we talk about Pune, whether we talk about Noida, whether we talk about Hyderabad or Nagpur. So there are 4 campuses of symbiosis law schools, and each of these campuses offers 2 programs. One is BALLB honors and the other one is BBLLB honors. Now you may decide to apply for all the campuses for all the courses, which means there are 8 options available to you, or you may decide to apply only for one of the campuses, one of the program. That's okay. But whatever you decide, wherever you want to take admission, or you are sure of that this is the only SLS I'm going to consider, please remember, for every program there is another fee which is 1,000 rupees per program per campus, which needs to be paid. Now if you don't pay, what happens? अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? So even if you go ahead and let's say I have scored a 60 out of 60 in SLAT, you will not be considered by the respective symbiosis law school for shortlisting. तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आप SLAT टॉपर भी हो और अगर आपने SLAT जो symbiosis एग्जामिनेशन जो हुआ है लॉ का, उसमें आपने अच्छा भी स्कोर किया है, बट आपका कट ऑफ में हो सकता है नाम इसलिए ना आए, शॉर्टलिस्ट में नाम इसलिए ना आए क्योंकि आपने वो जो पेमेंट थी जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल को करनी थी वो आपने नहीं किया है.
The date for the same is 20th. Most of these colleges are accepting the payment till 20th. So first thing first, if you have not done that, do that. You know how your exam went actually. So usko dhyan mein rakhte ho, isko kar lena. So three major exams are over. CLAT is over, ALT over, results announced. The admissions have started. The list will be declared based on the counseling participation. SLAT scorecard will come on 26th. From 27th, the shortlist will be announced, and starting 2nd and 3rd of January, the campuses will start conducting the personal interviews. And during the third week of January, the final result will be announced, which will be based on the performance in the SLAT examination along with the performance in the personal interview. तो SLAT examination का 30% वेटेज होगा, पर्सनल इंटरव्यू का स्लैट एग्जामिनेशन का 70% वेटेज होगा, पर्सनल इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा. तो जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे, दोज हु आर शॉर्टलिस्टेड, दे विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर द फाइनल एडमिशंस. सो प्लीज चेक दिस. मैंने ये पिछले वीडियो में भी इसके डेट्स, एग्जैक्ट डेट्स अनाउंस कर दिए थे. तो स्लैट का जो वीडियो है इस चैनल पे, उसको डेफिनेटली एक बार चेक कर लो. मैंने वहां पे डेट्स अनाउंस किए, बट कंसिडर 20th एज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट टू ऑल दी मैसेज लॉ स्कूल्स. इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है. एक दो कैंपस का शायद डेट अलग है, बट 20th को कंसिडर करके चलो. और आज 18th हो चुका है, तो अगले 2 दिन के अंदर, विच मीन्स बाय डे आफ्टर टुमारो, यू शुड मेक दैट पेमेंट. लॉग इन टू योर अकाउंट, मेक दैट पेमेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पता है आपका एग्जाम कैसा गया है, तो आप उसके बेसिस पे डेफिनेटली कॉल ले सकते हो. अभी जैसे मैंने बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन दैट देयर आर स्टिल लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस लेफ्ट एंड व्हिच विल बी कंडक्टेड एट अ लेटर स्टेज. नाउ सम ऑफ देम हैव बीन नोटिफाइड एज वेल, सम ऑफ देम हैव नॉट बीन नोटिफाइड येट एक्चुअली. तो what you have to do is you have to go to the respective websites. मैं एग्जाम पैटर्न की आज बात करूंगा. So and I'll talk about each of the examinations, which are the good colleges which you can look forward to through these examinations. And definitely you should explore your chances actually. So don't completely give it up. I would say don't give it up at all actually. There are still good universities available. तो डेफिनेटली इसके लिए ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई दूसरा स्टेप लेना, बैकअप जो भी प्लान में होगा उसके बारे में सोचना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन. इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है. They have already announced the date. The application form is not available right now. Hopefully by January 2nd week, the application form will be made live. So what they have announced is that the exam will be conducted between 1st and 3rd April. Now, I'll present this with a caveat over here. Why a caveat over here? बिकॉज पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि जो डेट्स है ना, वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, वो पोस्टपोन हो जाती हैं 10 दिन आगे. Now, why I'm mentioning this event? Because I do understand that the students who are from humanities stream in CBSE, which I do remember, they have their last exam on 1st of April. तो अगर उनका 1st April को पेपर हुआ तो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाएगा. मल्टीपल स्लॉट्स में होंगे एग्जामिनेशन, अलग अलग दिन पे होते हैं, हर किसी का एक स्लॉट नहीं होता है. So hopefully it might get postponed. I'm not sure at this point of time, but I'm considering it might happen, because they'll also take into consideration this, that some of the board exams may not be over by that point of time. So application is likely to open from the month of January. Now, what is typical about Maharashtra CET examination? Now, Maharashtra CET is conducted by the state government of Maharashtra. So they have an education cell which conducts all the entrance examinations for whom? For the government colleges or the government aided colleges in the state of Maharashtra. So, of course, you won't find Symbiosis as a part of Maharashtra CET. You won't find Narsi Monji as a part of Maharashtra CET, or a BITS Law as a part of Maharashtra CET. But then you'll have some good colleges over there. Now, whichever college which is affiliated to the state universities, like University of Mumbai. University of Mumbai is a state university. So, whichever law college is affiliated to Mumbai University, they would be admitting students based on their performance in the Maharashtra CET examination. Similarly, the colleges which are part of the Pune University or a Nagpur University or a Aurangabad University, they all will be admitting students for the 5-year law program based on the performance in the Maharashtra CET examination. Now, of course, if you consider the Maharashtra education system, 85% of the seats are reserved for the domicile, Maharashtra domicile students. Now, what is the criteria? One must have completed 10th and 12th from the state of Maharashtra. It is not about any particular board. It's not that you have to
uh, uh, be born over there. It is based on your education, class 10th and 12th from any board in the state of Maharashtra. As long you have studied in the state of Maharashtra, you have given your 10th and 12th examination from the state of Maharashtra, you are eligible for this 85%. But both 10th and 12th, not just 12th, both 10th and 12th. So 85% of the seats will be reserved for students who have Maharashtra domicile, and of course the reservation rules will apply over there. What about the remaining 15% seats? The remaining 15% seat will all be for outside Maharashtra students, which means other than the state of Maharashtra, or those who may have just completed 12th or something like that. For them, they will be considered as outside Maharashtra state. Now, in outside Maharashtra state category seats, which constitutes a total of 15%, there will be no reservation over there actually. So even if you belong to reserve category, like coming from a scheduled caste category or a scheduled tribe category or EWS, nothing works over here. Everybody is treated as a general category. So you'll be competing as a general category students when it comes to OMS outside Maharashtra state. But this is a common examination for more than 25 colleges which are affiliated or directly part of the respective state universities which are located in the state of Maharashtra. Now, the examination is online, basically a computer based test. It's a 2-hour test having these sections. So legal aptitude and legal reasoning is about 40 questions. General knowledge and current affairs is about 30 questions. Logical and analytical reasoning 40 questions. English will have 30 questions. So it will be a mix of reading comprehension, grammar and vocabulary based questions. And we have basic mathematics, which is up to class 10th level. So there are 10 questions from there. A total of 150 questions to be attempted in 120 minutes, and there is no negative marking in the paper. So for every correct attempt, you are awarded 1 mark, but you are not penalized if your answer is wrong. तो कोई penalty नहीं है, which also means कि अगर आप इस एग्जाम को लिखने वाले हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो मैंने सिम्बायोसिस के लिए बोला था, वो रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि 150 के 150 अटेम्प्ट कर आने होंगे, उसको आप छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मतलब क्या है? तो देखो, लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों चीजों की जब हम बात करते हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड हियर टेक्निकली मींस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीगल नॉलेज। तो करंट अफेयर्स भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड बी एज इजी एज हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और on which day the constitution was adopted, as easy as that, even if it is static actually. तो static भी हो सकता है, current affairs कोई important judgment है उससे related पूछा जा सकता है, कोई basic कोई amendment है constitution का, so anything which is GK around the legal, basically law के related जो भी GK होता है वो legal knowledge में consider होता है, and that is what makes it legal aptitude. और legal reasoning जो है, यहाँ पर आप देखोगे जिन्होंने symbiosis दिया है उसी type का legal reasoning आएगा. Otherwise, the best way to practice for this is to solve questions which appeared in CLAT 2008 to CLAT 2019. तो जितने भी नॉन एनएलयू एंट्रेंसेस हैं अदर देन LNAT, इफ यू प्रैक्टिस द क्लैट पेपर्स ऑफ 2008 to 2019, they are really helpful because you find those kind of questions appearing over here. Of course current affairs तो updated होगा, तो यहाँ पे स्टैटिक जीके भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग पर फोकस ज्यादा होगा. सो सीरीज, कोडिंग, कैलेंडर, ब्लड रिलेशंस, पजल्स, इसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80%. इंग्लिश विल बी वर्बल एबिलिटी, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, एंड आपके वोकैब और ग्रामर को भी टेस्ट करेंगे. ठीक है. और बेसिक मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस होता है, तो आपको अरिथमेटिक ढंग से प्रैक्टिस करनी है, लाइक यू डिड इट फॉर सिम्बायोसिस. तो इसको और थोड़ा बेहतर लेवल पे प्रैक्टिस करना है. अब इसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? टॉप कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, विच इंसिडेंटली इज इंडियाज फर्स्ट लॉ कॉलेज. तो यहाँ के एलुमनाइज के कुछ नाम बता देता हूँ. द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नानी पालखीवाला की हम बात कर सकते हैं. राम जेठमलानी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर्स इन आवर कंट्री, हम उनकी बात कर सकते हैं. Former President of India Pratibha Patil is an alumni from Government Law College Mumbai. Former Deputy Prime Minister Lal Krishna Advani is a alumni from here. So it has definitely a long list of notable alumni actually.
and it is one of the top colleges in our country as well. Now, for outside Maharashtra students, the cutoff generally varies between 120 out of 120, 120 to 123 out of 150 marks. तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का कट ऑफ कितना होता होगा? महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, 116 टू 118 जाएगा, 2-3 नंबर का फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है. Then we have ILS Law College in Pune. It is the one of the oldest law colleges. If I remember correctly, it's 1922 actually. So the second oldest law college technically. That's the cutoff range for the outside Maharashtra state students. If I talk about, then we have Praveen Gandhi College of Law in Mumbai, University of Mumbai Law Academy. It's a university department in Mumbai. And then we have Rizvi Law College, Mumbai. इसके अलावा I can give you one more option in Pune, which is Namalmal Firodia College. So ये 6 colleges हैं which are worth considering. If you are from outside Maharashtra state, तो ये आप definitely consider कर सकते हो. Namalmal Firodia is a constituent of Ferguson College of Pune. Ferguson is quite a well-known name. Almost cut off इसके बराबर ही रहेगा. So these are your top colleges through which you can get admissions to the to top colleges through the Maharashtra entrance examination. You can get admissions to these colleges. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, इसको डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. दूसरा है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव हो चुका है. अगेन दे हैव 2 प्रोग्राम्स, बीए एलएलबी एज वेल एज बीबीए एलएलबी ऑनर्स, और इसके काफी सारे कैंपसेस हैं. सो बेंगलुरु इटसेल्फ हैज 4 कैंपसेस, the oldest being Central Campus, and that's one of the best in the country. Then we have NCR campus, which is in Ghaziabad, and Lavasa, which is a 2-hour drive from Pune. So they call it Pune campus basically, but Lavasa. तो all 7 campuses हैं. बैंगलोर में 4, एक एनसीआर में और एक लवासा में, और इनका जो एग्जाम होता है दैट इज कॉमन. सो वन सिंगल एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल दी 7 campuses of Christ University. They have an examination, and this year the exam is scheduled on 6th April and 9th May. So there are 2 slots. Just like Symbiosis did 2 slots, Christ University also has 2 slots. You can appear for both these slots, or you can appear for one of these slots. Now, each slot is independent of the other slot. Unlike SLAT. SLAT mein kya tha? You could appear for both these slots, and the best score out of the 2 would be considered. But yahan par kya hai? There is another stage applicable over here. So the exam is followed by, for the shortlisted students, micro presentation, personal interview, and skill assessment. So extempore, personal interview, all that happens, and it happens immediately after the examination. So the exam, let's say, happens on 6th of April. Expect the results to be announced by 7th April. And 8th, 9th, 10th onwards, they'll conduct the micro presentation skill assessments. I think this time they have given the dates around 11th to 15th of April. So 2-3 दिन में results आ जाएंगे और आपको invite आ जाएगा कि आपको इस दिन micro presentation और personal interview के लिए appear होना है. And then the final results will be announced after a day or 2, and within a week you have to make the payment. So each slot is independent of the other. So it's not that you can write on 6th April and 9th May and the best score will be considered. Each slot is independent और हर किसी का अपना process है. Okay. So my advice only is to, if you can manage both, give both. Otherwise, attempt the May one, because you are definitely going to appear for your class 12 board examination in February and March. Abhi ye bhi hai, one of the most important examinations in your life. So class 12 board exams hai, jo mostly third week of March tak chalengi ya last week of March tak chalengi. So you may not have enough time to revise and consolidate, because your Jan, Feb, March is now going to be occupied with your board exam preparation. तो मेरा सजेशन होगा, प्रेफर द मे अटेम्प्ट, बट इफ यू कैन टेक द 6th अप्रैल अटेम्प्ट, दैट्स वेल एंड गुड एक्चुअली. ठीक है. तो 6th अप्रैल के लिए द एप्लीकेशन विल क्लोज ऑन 26th of March. For the May attempt, the application will close on 29th of April, and this is where you have to go and complete your application, which is christuniversity.in. So this is the portal. यहाँ पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फिल करोगे. इसका क्या है? CET सेल है, or you can even go ahead and type this website mahacet.org
and this is the portal where the application will come live for Maharashtra CET. तो ये दो एग्जाम्स हो गए. यहां पर भी पैटर्न देखोगे तो इंग्लिश है विच इज वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स अलग सेक्शन है, स्टैटिक जीके अलग सेक्शन है, रीजनिंग, एनालिटिकल और लॉजिकल, एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो यहां पर लीगल का सेक्शन नहीं होगा इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मैथ्स का सेक्शन नहीं होगा, यहां पर डीआई आएगा. आई एम श्योर यू आर नाउ कंफर्टेबल विद दिस. थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा. एंड हम बार बार बोल रहे थे क्लैट के लिए डीआई पे फोकस करो, केसलेट्स पे फोकस करो, बट नाउ दिस द टाइम यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस. 120 questions to be attempted in 120 minutes. Again, no negative marking. So the rule remains same. You have to attempt every single question. इसकी वजह से कट ऑफ हाई हो जाता है. ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन टेस्ट. तो जो बॉम्बे का एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी है, वो भी जो किरित पी मेहता लॉ स्कूल है, उनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है. while they do not mention it on their website, it is presumed that 80% of the seats in NMIMS University is filled through their own examination, which is known as NMIMS LAT, Law Admission Test. Now, NMIMS has multiple campuses: Mumbai, Navi Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Indore, Chandigarh, and Dhule. Single exam happens for the BA and BBA LLB program offered by these campuses. The dates have not been announced yet, actually, but I'm expecting very soon, within the next few days, the dates would be announced. Last year, initially, they announced only one phase of the examination, which ran from 1st of January to 15th of March, basically. तो इस बीच में आपको एग्जाम लिखना था, but later they announced April May schedule as well. So hopefully this year they'll keep it same. So there would be two phases hopefully for the examination to appear for the NLAT examination. So it's just time to wait actually, क्योंकि अभी तक formal announcement website पे अभी तक नहीं आया है. And the website for this examination is nmimslat.in. तो यहां पर जाकर के तुम्हें अप्लाई करना होगा. तो होपफुली अगले कुछ दिनों में द एप्लीकेशन विल गो लाइव एंड द डेट्स विल बी अनाउंस्ड फॉर द एग्जामिनेशन. But NMIMS also accepts CLAT scores. So my take would be, if you are under 3000 rank, your chances would be higher. But अगर 5000 rank है, तो definitely नार्सी मोंजी explore कर सकते हो. So when you are applying for NLAT, also leave the option of the CLAT scores which can be submitted over there. तो उसके basis पर भी आप admission ले सकते हैं. But majority, the preference goes to their own examination. Please understand that. Okay. अब यहाँ क्या होता है? Verbal reasoning है, जनरल नॉलेज है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है. वर्बल रीजनिंग बेसिकली इनका इंग्लिश सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी सेक्शन है. लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग. लीगल रीजनिंग कौन सा? क्लैट इस साल का नहीं, जो क्लैट का पैटर्न 2019 तक होता था, प्रिंसिपल फैक्ट, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. 150 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 120 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग. सो देखोगे क्लैट और रियलिटी के बियॉन्ड जितने भी एग्जाम्स है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो फर्स्ट थंब रूल तो यही है कि पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, एंड उसके बाद उसको हम लोग फुल पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ दिस ईयर वन मेजर चेंज हैज हैपेंड इन आवर कंट्री. We do not have LSAT India any further. So the Law School Admission Council, which was the owner of the LSAT India examination, they have decided to move out of India. Whatever the reasons would be, probably not enough number of test takers to sustain the examination. So they have decided to move out. And of course, Jindal Global Law School was only accepting LSAT India score. Now, what they have done is they have tied up with the Law National Aptitude Test, which is an examination conducted for the top law schools of United Kingdom, Britain. So University of Cambridge, Harvard, वहां पर जो एडमिशंस होते हैं लॉ प्रोग्राम में, वो एलनैट के थ्रू होते हैं, द लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ जिंदल हैज टाइड अप विद दैट. पियर्सन विल बी डूइंग द एग्जाम अगेन. सो आपको एलनैट का एग्जाम देना पड़ेगा. जो फर्स्ट फेज का अनाउंसमेंट है वो है 31st ऑफ दिसंबर तक आपको अप्लाई करके एग्जाम दे देना होगा, so that you will be considered for first phase of admission. Second phase का announcement अभी आएगा. तो अब LSAT India नहीं है. Even BITS Law Mumbai will accept LNAT as one of the alternatives to CLAT or their own examination, which is BITS LAT. So BITS का जो law admission test है, उसके जगह पे आप अगर LNAT लिख रहे हो for Jindal, तो you can present that score as well. Now, what is LNAT all about? What is the structure? So in LNAT, there are two sections. Section A is
reading or the language reasoning paper, where in the total mark of 42 is there, 42 क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट पैसेजेस होंगे, और ये होता है आपका एलनेट स्कोर. एसए को कंसिडर नहीं करते हैं. एंड यू नीड नॉट राइट द एसए फॉर द इंडियन लॉ स्कूल, बिकॉज जिंदल ने कैटेगरिकली बोला है कि वो एसए को इवेलुएट नहीं करेंगे. जो एसए राइटिंग कंपोनेंट है एलनेट का, वो इवेलुएट नहीं करेंगे. तो इट डजंट मेक सेंस. बिट्स लॉ में भी ऐसे इवेलुएट नहीं होगा. So you go ahead and attempt that. So LNAT is slightly different. It only tests your language reasoning skills, which is English basically. You can say it is modeled like your LSAT paper, but in a different way. LSAT में analytical reasoning भी था, logical reasoning भी था, but यहाँ पर वो नहीं है. So it only tests your language abilities basically. It's a ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो एलनैट अगर देना है जिंदल के लिए, जिंदल कंसिडरेशन लिस्ट में है, तो डेफिनेटली आपको एलनैट देना पड़ेगा, और बिट्स लॉ एलनैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगा. But you have to do it fast, because then you have to complete it by the 31st of December, first phase. And last but not the least, you have UPES Dehradun. Now, UPES Dehradun is a decent law school, and they have again multiple programs in law. Now, what I want to share here is that you can take admission to UPS Dehradun through your CLAT score as well. Okay. Now, जिनका 15,000 तक rank है, वो apply कर सकते हैं. Please understand, you can apply. But there is personal interview involved over here. तो आपका इंटरव्यू होगा. डायरेक्ट अप्लाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू होगा. मान लो आपका रैंक अच्छा नहीं है, 12th में 75% नहीं है, 10th और 12th दोनों में 75% नहीं है, then you should definitely appear for ULSAT examination. Otherwise, you are exempted to take ULSAT examination. मान लो 50% ही रह गया क्लास 10th और 12th में, लेकिन AIR क्लैट का अप टू 1500 है, तो आप ULSAT से एग्जेम्प्टेड हो. मान लो क्लैट का AIR 1500 के नीचे जाता है, लोअर हो जाता है, 15,000 के नीचे चला जाता है, 16,000 आपका ऑल इंडिया रैंक है, बट 12th में और 10th में दोनों में 75% से ऊपर मार्क्स है, तो भी यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ULSAT. बट एक ध्यान में रखना कि ओनली 20% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू बोर्ड मेरिट क्लैट, एंड दे इवन कंसिडर CUT एग्जामिनेशन, बट दैट विल बी कंडक्टेड एट अ लेटर स्टेज. अब जो ULSAT होता है उसमें क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल जनरल नॉलेज एंड लीगल एप्टीट्यूड. सो यहाँ पे लीगल रीजनिंग सेपरेट है, लीगल नॉलेज सेपरेट है. Again 150 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड इन 120 मिनट्स. तो मोस्टली देखोगे जो नॉन एनएलयू एंट्रेंसेस है ना, उसमें ये एरियाज कवर होते हैं. वर्बल एबिलिटी कवर होता है, जहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेजेस, जो बहुत प्रैक्टिस किया क्लैट और एआईलेट के लिए. इसके अलावा आपको ग्रामर के फंडामेंटल्स पे टेस्ट किया जाएगा. इसके अलावा आपके वोकैबुलरी को टेस्ट किया जाएगा. सो दीज आर द एरियाज. क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको फोकस करना है सबसे पहले अरिथमेटिक पे, क्योंकि जहां जहां मैथ्स है वहां पे सबसे पहले अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, फिर नंबर सिस्टम होगा, बेसिक अलजेब्रा, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह, बट मेजरली जो क्वेश्चंस होंगे वो अरिथमेटिक से होंगे. डेटा इंटरप्रिटेशन एक दो जगहों पे आएगा. लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली एनालिटिकल रीजनिंग पे फोकस करेगा, एंड लीगल नॉलेज एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स. तो my take would be the best resources to practice for this is CLAT 2008 to 2019 paper, and that's almost 12 years. I would say 12 years of paper, good enough. 200 नंबर के आते थे पेपर, तो आपको ऑलमोस्ट, मैं बात करूं, 2400 क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए. सो यू डोंट लुक beyond this, and all LST students who are part of classroom, whether online or physical classroom centers, you have a book which is past solved papers over the years. आप उसको definitely अच्छे से focus करो, and this will really help for these examination. Now, before I close, here's something important. देखो, there are a lot of colleges which are still available based on CLAT score. तो अगर तुम्हारा rank almost 2000 से ऊपर है, अच्छा है, तो निर्मा यूनिवर्सिटी डेफिनेटली शुड बी ऑन योर कंसिडरेशन लिस्ट. नरसिम्हन जी क्लैट के थ्रू भी है, अपना एग्जाम भी है. दोज हु आर फ्रॉम दिल्ली, IP University is there, and you have two good colleges: University School of Law and Legal Studies, University School of Law and Legal Studies Dwarka, which is the main department or law department of IP University, and you have another college which is Vivekananda Institute of Professional Studies. Now, if you are from Delhi, you get 85% reservation benefit, and that is based on your 11th and 12th schooling.
तो अगर आप एनसीआर से हो और दिल्ली जाकर के आपकी 11th एंड 12th की स्कूलिंग हुई है तो आप बेनिफिट मिलेगा आपको 85% रिजर्वेशन का। बट अगर आप दिल्ली से और आपकी स्कूल जो है, आपका जो स्कूल है वो एनसीआर में है, तो यू लूज दैट बेनिफिट। ओके, सो ये है अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। UPS, definitely I spoke about. BITS Law is an upcoming and a good opportunity. Beyond that, you can look forward to BML Munjal Bennett. So my take would be, before you decide anything in haste, please explore all the good opportunities, whether based on CLAT or based on these examination you should be definitely taking up. तो ये definitely करना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो ऑफ कोर्स प्लीज अंडरस्टैंड, एप्लीकेशंस धीरे धीरे अब निकलते चले आएंगे, तो आपको नजर रखनी है इन वेबसाइट्स पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द लास्ट डे? 20th कंसिडर करो, 20th तक अप्लाई कर दो। शुड वी गो फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड एनएलयू भोपाल और सिम्बायोसिस पुणे नोएडा वुड बी अ मच बेटर कंसिडरेशन। You have to look at the return on investment. Okay, so from that perspective, you have to understand that Symbiosis anyways is one of the finest, especially SLS Pune. You should not leave that. Which one is better, RML NLU और RG NLU? Almost at par, बहुत फर्क नहीं है, बिल्कुल at par है एक दूसरे से। तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर एनी ऑफ दैट। एक्चुअली कोई फर्क ऐसा नहीं है जो बताया जा सके कि मतलब बहुत डिफरेंट है, बट एट पार है दोनों। ओके, आईलेट बेस नहीं है, नहीं, आईलेट का जो स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ एनएलयू दिल्ली के लिए ही है, और कोई इंस्टीट्यूशन जनरली आईलेट के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करते। नो, आई एम नॉट फ्रॉम ग्वालियर, I am from NCR of Delhi, actually. Born and brought up somewhere else, but I have done my all education over here. So I'm not from Gwalior, but I keep coming over there. Okay. So guys, the recap, please understand, बहुत opportunities अभी भी हैं. Just go ahead, prepare for these examination. ठीक है? Don't simply go ahead and say मुझे drop कर देना चाहिए, next year क्वेश्चन कुछ और करना चाहिए। अभी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। हर एनएलयू उतना अच्छा नहीं है, लोअर रैंक एनएलयू से बेटर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मैंने आज बात की है, तो उनको डेफिनेटली अपने कंसिडरेशन में लिखो। यस, ही इज आवर फुल टाइम क्लासरूम स्टूडेंट फ्रॉम ग्वालियर। ऑल द स्टूडेंट्स दे प्रिपेयर्ड, जो भी टॉप रैंक्स हैं वो 2 ईयर्स से हैं। AIR 6 एलेट का टेस्ट सीरीज था जो हमने मेंशन किया है, मैंने उसको क्लासरूम नहीं दिखाया। We get our results audited by a third party who can lose a license if they go ahead and do something wrong. So we don't take those chances. हमारे सारे results audit होते हैं, so there's no question mark out there. Symbiosis, Pune or Jindal, my take would be Pune, of course, but then you may evaluate based on your personal reasons. Okay, that's important. Chalo guys, all the best and keep your focus on your class 12th as well. सबके बोर्ड्स आ रहे हैं तो बिल्कुल उस पर तैयारी करो। दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उस पर ध्यान रखना है। उसको आप लेस इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो कि बिकॉज ठीक है लॉ ही करना है, तो प्लीज उसको रखो ध्यान में। बट कीप सम आवर्स एवरी डे फॉर दीज एग्जामिनेशंस एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, सो यू विल डेफिनेटली हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन टुडे। वंडरफुल ऑडियंस आई वुड से, थैंक यू सो मच। ठीक है।